Class 11th Commerce, Subject Business Studies, Chapter number 2, Forms of Business Organizations, Lecture number 9. Formation of a company, stages and important document. Now listen, all the process how a company is formed, which are the stages through whom a company passes. There are so many legal formalities, those are done. Let us start. Formation of a company means bringing a company into its existence. Existence माने उसको असलियत में कंपनी की फॉर्म में लेकर के आना. And starting its business and then to start the business. It involves completion of a lot of legal formalities and procedures. When we discuss about the formation of a company, there are many legal formalities. Those are completed. There are so many procedures which are also completed. Following are the steps involved in the formation of a company. Now see, how many are the steps and what are the steps? All this is going to be discussed now. See. Point number 1 is promotion. Promotion means conceiving a business opportunity. उसके विषय में सोचना, to think about business. That is promotion. Promotion means conceiving a business opportunity and taking an initiative माने आगे बढ़ करके कदम उठा करके कंपनी के विषय पे सोचना और उसको बनाने के बारे में सोचना. Point number 1. Promotion means conceiving a business opportunity and taking an initiative, फिर एक कदम उठाना, to form a company. A company being an artificial person requires somebody who conceives a business idea. देखिए, बिजनेस जो हमारी कंपनी है वो itself it is an artificial person. Until and unless anybody brings the company into its existence, that company by itself can do nothing. A company being an artificial person requires somebody who conceives a business idea. उसके बाद सी there was some idea, there is some idea that is in your mind that you want to just start a company. After that decides to form a company, takes decisions. Promotion में you will have to think about company. It means you want to start the company form of business organization. Then you want to take some initiative, and that initiative will be on the way that you can start, you can bring a company into its existence. A company being an artificial person requires somebody who conceives a business idea, decides to form, मतलब अब देखिए, now you are thinking about business idea, now you are deciding to form company, you are taking decisions. This is all promotion. And now see, वो इंसान जो इन सब कामों के लिए about its size, its types, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अब. And now see, the person who is responsible for taking such decisions are called promoters. In promotion, the promoter or the person who wants to bring the company into its existence will think about its size, type, structure, takes preliminary steps for its formation and assume which is the risk associated with it. Steps in the promotion or functions of a promoter. Point number A, identification of business.
ideas or opportunities, for example producing a new product or service. Now see, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस का मतलब है विच टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट व्हेन यू वांट टू फॉर्म अ कंपनी, because definitely company will require many crores. It is very tedious job, very lengthy, difficult, complex job. And now first step, what will you think about? That is identification of business. Which business you want to start, what you want to produce, which service you want to give. After that B number, feasibility studies. देखिए feasibility होता है संभावनाएं, possibility. And whatever you have thought in A number, it can be to produce some new product, it can be some service that you want to give. Now you will think कि जो आपने A नंबर में सोचा है उसमें कितनी feasibility है, कितनी possibility है. The promoters undertake detailed feasibility studies to investigate all aspects, होते हैं बेटे पहलू, all the aspects of the business with the help of the specialists. Like, and now listen, when we are discussing about the feasibility, हम हर चीज की feasibility देखेंगे. Can I start that business? क्या मैं वो व्यापार को शुरू कर सकती हूँ? Will it be really good if I start that business? क्या सच में ही अच्छा होगा जो मैं उस व्यापार को करूं? And then specialists are required. First of all, engineer name is written. See, you will require those engineers, those who help in construction. यानी कि आपको एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर चाहिए. Then whatever the business you want to start, उस व्यापार में क्या क्या मशीनरीज चाहिए, अगेन द इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड. दे विल कीप ऑन टेलिंग यू कि क्या करने पर कितना टैक्स में बचत होगी, कितना टैक्स आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा. इफ द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली एंड फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली फीजिबल, फीजिबल होता है बेटे पॉसिबल, फॉर वायबिलिटी. देखिए वायबल का मतलब है चीजों को संभव बनाना. संभव कौन बनाएगा? प्रमोटर बनाएगा. और प्रमोटर के लिए देखिए कितना हेल्पफुल रहेगा. सी, everybody will have to help promoter because he is the person who has conceived an idea, who wants to start a business. If the project is technically मशीनी तौर पर, फाइनेंशियली मनी के तौर पर, इन इकोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली feasible, for the viability in the promoters may decides to actually launch the company. Now listen, अब ये सारी चीजें will have to think, will have to decide. If the promoter thinks that all the things they are viable, they are possible, in that case he will think कि नहीं चलिए now actually a company is going to be launched, कि now अब हम कंपनी को सच में ही शुरू करने जा रहे हैं. सी नंबर, नेम अप्रूवल. देखिए वेन एवर द मैटर कम्स ऑफ नेम अप्रूवल, द नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर बिजनेस. इट शुड नॉट रिजेंबल like any other business, otherwise people will remain confused. Is it your business or anybody else? So name should be different. Having decided to launch a company, the promoters have to select a name for it. अब देखिए प्रमोटर वो इंसान है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर के आ रहा है. Now that person will think about the name for the any company. किसी कंपनी के लिए जो नाम सोचने का काम है, that will be of the promoter, and submit an application. और देखिए now application for name will be submitted to the registrar of companies act. वो अपने अपने देखिए मान लीजिए हम हरियाणा में है, देन जो हरियाणा स्टेट का रजिस्ट्रार है कंपनीज का, टू दैट द एप्लीकेशन विल बी गिवन. नेम अप्रूवल वी आर डिस्कसिंग नाउ. Having decided to launch a company, the promoters have to select a name for it and submit an application to the registrar of companies of the state for its approval. Now listen, if your name does not resemble any other's business's name, in that case approval will be given. Otherwise some instruction will be given to the promoter कि नहीं नाम बदलिए, ऐसा नाम तो पहले भी है, think some another name, then they will have to do.
The proposed name must not be the same or similar to that of another existing company. डी नंबर, फिक्सिंग. देखिए सिग्नेटरीज होते हैं जो लोग साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को. फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नाउ यू नीड सम डायरेक्टर्स, those who will keep on signing all the important documents of any company. D number, fixing up signatories to the memorandum of association. Promoters have to decide about the members who will be sending the memorandum of association of the proposed company. And now listen, all the rules regulations, they are written in memorandum of association. अब जो रूल रेगुलेशन की जो बुक है, जो पूरा एक बुकलेट है, दैट विल बी सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. सी, अब इसमें क्या देखिए, बढ़िए दोबारा से, क्या मैंने बोला. सी, प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट व्हाट द मेंबर्स हु विल बी सेंडिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रमोटर्स ने अब ये भी डिसाइड करना, देखिए मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, कि शेयर अबाउट द शेयर होल्डर्स हु विल बी सेंडिंग. नाउ सी, प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स की लिस्ट भी भेजेंगे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास में. प्रपोज्ड कंपनी अभी बनी नहीं है, सो इट विल बी प्रपोज्ड. दिस इज द कंपनी अबाउट विच अ प्रमोटर इज थिंकिंग अबाउट. यूजुअली दे आर ऑल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. यानी कि देखिए प्रमोटर्स भी बन गए और फिर लेटर ऑन दे बिकेम द डायरेक्टर्स. E number, appointment of professionals. Until and unless good professionals are appointed by a company, no work can be started, no correct idea of any money, any machinery a company can get. E number, appointment of professionals. Promoters, merchant bankers, auditors, they have to assist them in the preparation of necessary documents. They all professionals, they will help promoters, merchant bankers, auditors to assist them in the preparation of the necessary documents. See, जब हमने प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर लिया, प्रोफेशनल से हेल्प करेंगे, वो हेल्प होगी प्रमोटर की, so that the documents, important documents can be submitted विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. की हम कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, वी कुड सेंड देम. प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स. A number, application for incorporation. Promoters make an application for the incorporation of the company to the registrar of companies along with the necessary documents. अब necessary documents को collect करना, it is the work of promoters. Filing up of necessary documents. And now see, which are the important documents? Memorandum of association. It defines the objectives and activities of the company. One number is articles of association. The rules regarding the internal management of the company, those all are written in articles of association. Statement of authorized capital. यहाँ देखिए, whatever the maximum limit is given in written to the registrar of the companies, no company can raise more capital. Whatever has been authorized by the directors, उससे ज़्यादा कैपिटल लाइफ टाइम में कंपनी के कोई भी उसको इशू नहीं कर सकता. If any alteration is required in authorized capital, in that case all the directors, they should call annual general meeting. It should be signed, it should be decided, and then later on it should be informed to the registrar of the companies. Second number,
सी statement of authorized capital. Authorized capital is the maximum capital which the company will be authorized to reach through the issue of, देखिए वो पैसा how will they get? They will get that money only by the issue of shares. Third number, written consent of the proposed directors to act as directors and an undertaking to purchase and pay for qualification shares. अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोग बात सुनिए बेटा. पहले ये देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स. इफ एनीबडी हैज बीन प्रपोज्ड कि भाई ये मिस्टर जो है डायरेक्टर होंगे, तो उनको डायरेक्टर बनने के लिए ही हैज टू बाय सम शेयर्स. until and unless those shares are bought, that person cannot be the director. Written consent of the proposed director that he will act as directors and they will get the undertaking to purchase, and the director will have to pay. The person, those who want to be the director, they have to pay, they will have to buy for qualification shares. देखिए क्वालिफिकेशन शेयर का मतलब है, अगर आपने क्वालिफिकेशन शेयर खरीद लिए, नाउ यू हैव गॉट द क्वालिफिकेशन टू बिकम डायरेक्टर्स. So to become a director, it is very much necessary to buy qualification shares. And I have told you that authorized capital maximum capital है, उससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं हो सकती ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. फोर्थ नंबर, अग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजमेंट. अभी देखिए उन लोग के साथ एक हमारा एग्रीमेंट होगा. इन दैट एग्रीमेंट व्हाट विल बी रिटन कि सर जब भी हमें आपकी जरूरत है यू विल बी विद अस. इट कैन बी फुल टाइम, इट कैन बी ऑल टाइम, इट कैन बी सम टाइम. फोर्थ नंबर, एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. फिफ्थ नंबर, कॉपी ऑफ इंप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी. एंड नाउ लिसन, इफ द नेम इम्प्रूवमेंट का कोई जरूरत है, इफ यू वॉन्ट टू डू ऑल दिस, देन वन कॉपी विल बी सेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. कॉपी आपको उसको रखना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 7 देखो बेटे, सी स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ अफर्मिंग. अफर्मिंग माने होता है किसी चीज को पक्का कर लेना. That all the legal requirements for registration have been complied with, माने कि जो भी हमें बोला गया था डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, पेपर्स तैयार करने के लिए, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लाइड, माने वट एवर इज सेड दैट इज डन. पॉइंट नंबर 7, स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ अफर्मिंग that all the legal requirements for registration have been complied with. This must be signed. देखिए whatever the papers you have got ready, it must be signed by an advocate of a high court or supreme court or a signatory to the. सी ये देखिए, या तो एडवोकेट साइन करेगा, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, और द सिग्नेटरी का मतलब है वो इन द डायरेक्टर हु हैज साइंड the memorandum of association or chartered accountant see it is or chartered accountant or company secretary in whole time practice in India. These all are the names suggested. They can sign all the statutory declaration for the registration of any company. Above, see, whatever the statutory declaration is there, it must be signed by any of these persons to whom I have explained just now. Payment of fees. Along with filing of above documents, registration fees has to be deposited, which depends on the amount of the authorized capital. See, capital is more, fees will be more, capital is less, fees will be less. Payment of fees. Fees will depend upon the amount of the authorized capital. Authorized capital is the total capital that can be raised throughout the lifetime of a company. Registration. The registrar verifies that all the documents submitted एंड डॉक्यूमेंट्री. देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं उसके लिए आपने प्रूफ दिए हुए हैं, एविडेंस दिए हुए हैं.
registration. Registrar verifies all the documents submitted and documentary evidence of the payment of registration fees. If he finds himself satisfied that all the statutory requirements regarding the registration of the company that you people are deciding to open have been complied with, then what is done by the registrar of the companies? He enters the name of the company in his register. But the registration is done only if the registrar is satisfied, only then. Otherwise name will never be written if there is any shortcoming का मतलब होता है कमी in the documents, then he will guide you what to do. Certificate of incorporation. After entering the name ऑफ द कंपनी, देखिए रजिस्ट्रार ने आपके कंपनी के नाम को रजिस्टर में लिख लिया. आफ्टर रजिस्टरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम बोलते हैं कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट. इट मीन्स नाउ द कंपनी हैज टेकन बर्थ, नाउ द बिजनेस कैन बी स्टार्टेड. The effect of certificate of incorporation of the company is legally bound on that date, and it has been legally born. It has legally born on the date printed on the certificate of incorporation. यानी कि उस वाला दिन में उसका जन्म हो चुका है कंपनी का. It becomes a legal entity with perpetual succession on such date. It can legally enter into a valid contracts on or after this date. यानी कि देखिए अब क्या है कि द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी हैज गॉट, नाउ दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस, नाउ इट हैज बीन द लीगल एंटिटी. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कोई मरे जिए, द कंपनी विल गो ऑन. इन प्रीवियस स्लाइड्स आई गेव यू द एग्जांपल कि अगर कोई सारे के सारे शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है इन एनी बॉम्ब ब्लास्ट, इवन देन द कंपनी विल कीप ऑन वर्किंग. कंपनी का काम स्टार्ट रहेगा, इट विल कीप ऑन वर्किंग. It becomes a legal entity with the perpetual succession on the date. It can legally enter into a valid contracts और after this date, या तो उस डेट से या उसके बाद से वो सारे काम अपने स्टार्ट कर सकते हैं. The certificate of incorporation is the conclusion evidence, conclusive evidence. देखिए अब ये जो हमें सर्टिफिकेट मिल गया है ये एविडेंस है, प्रूफ है ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी के जो हमारी कंपनी है अब वो लीगली एग्जिस्टेंस में आ चुकी है. उसके बाद में देखिए एग्जांपल दे रखा है डिसीज्ड केस जुबली कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस, मैंने किसके साथ लड़ाई हुई थी, लिवाइस डॉक्यूमेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन वर फाइल्ड ऑन 6 जनवरी. द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज इशूड ऑन 8 जनवरी. देखिए सिर्फ ये एक एग्जांपल है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. यहाँ पे 6 and 8 डेट है, याद रखिएगा. But the date mentioned on the certificate was 6 January. On 6 January, the company allotted some shares to the Levi's, LEWIS. It was held that the allotment of the shares was valid since in the eyes of the law the company was formed on 6th January. जब कंपनी 6 जनवरी को एग्जिस्टेंस में आ गई है then they were authorized, they could allot shares. And now listen to your homework, write and learn whatever the topic I have taught you today. बेटे देखिए I have not seen you, have not seen me. Definitely soon we will meet, but it is your mandatory duty to keep on doing your work. It should be up to date. Thank you so much.